Good morning, students. Let's continue our chapter MOM. So, let's start the reading of the chapter. In 2013, a team of scientists at ISRO was racing against time to complete an important mission. Students, in 2013, a team of scientists was ready to complete an important mission. ISRO is an institute of India. They wanted to send a satellite into orbit around Mars. The scientists of the institute wanted to send a satellite into orbit around Mars. Nobody in India had ever tried such a thing before. It was the first attempt that they were sending the satellite into Mars. Before this, no one had tried this. Okay. In 18 months, Earth and Mars would come very close to each other as they orbited the Sun. Students, you know Earth and Mars both orbit around the Sun. Okay, and the scientists were making a guess that in 18 months, Earth and Mars, when they orbit around the Sun, then they would come closer. That scientists wanted to send the satellites into the space then. That time when Earth and Mars will come close, at that time they wanted to send the satellite into space because it would need less energy. Okay. In fact, Mars is far from Earth. Mars दूर है, बट जब वो ऑर्बिट करेंगे सन के अराउंड, तो जब वो क्लोज आ जाएंगे तब ये सैटेलाइट भेजा जाएगा ताकि एनर्जी की ज़रूरत कम पड़े. Once launched, the satellite would enter Mars orbit. It would then send the scientists important information about Mars surface and atmosphere. Yes, it is obviously when the satellite will be launched, then the satellite would enter Mars orbit and it would send the information of Mars surface and atmosphere. That's why the satellite is going to be sent. After months of hard work, bad weather delayed the launch by 5 days. Okay, means the time that they had decided to send the satellite, it was delayed by 5 days because of bad weather. Everyone was very nervous indeed. Okay, at that time, everyone was nervous. 5 November 2013, thankfully it was a success. Means this mission was successful. But their work wasn't done yet. The satellite's engine was not strong enough to take it out of Earth's orbit. Okay, now here is defining that how their work was successful, how it was going on. Actually, the satellite's engine was not strong and it was not there. This is not possible to take it out of Earth's orbit. They had to come up with a way to generate a lot of speed fast. So they made the satellite orbit around the Earth 6 times. They made the satellite orbit around the Earth 6 times. तो उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने, अर्थ की ऑर्बिट से ही नहीं निकल पा रहा सैटेलाइट क्योंकि उसका इंजन स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो उन्होंने क्या किया, सैटेलाइट को पहले 6 बार ऑर्बिट किया अर्थ के ही चारों तरफ, अराउंड अर्थ उसको ऑर्बिट कराया 6 टाइम्स एंड वेटेड अंटिल इट पिक्ड अप एनफ स्पीड. इंजन की स्पीड नहीं थी ना, ताकि इससे उसकी स्पीड बन जाए. देन दे फायर्ड द इंजन्स टू थ्रस्ट सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ऑर्बिट. फिर क्या होगा, एकदम से झटके से जो सैटेलाइट है वो अर्थ की ऑर्बिट से निकल जाएगा. स्टूडेंट्स, हियर इज गिवन एग्जांपल. द टेक्निक दे यूज्ड इज अ लॉट like when you tie a ball to a piece of string and rotate it over your head until it build enough energy to fly out of your hand with great speed. जैसे कि हम क्या करते हैं, हमें बॉल फेंकनी है तो हम बॉल को पहले सिर के ऊपर बहुत बार राउंड अप करते रहते हैं. तो इससे क्या होता है, बॉल की स्पीड बड़ी तेज हो जाती है और उसके बाद वो हिट करती है. तो सेम साइंटिस्ट लॉजिक यूज कर रहे थे. द नेक्स्ट ऑब्स्टेकल मीन्स स्टूडेंट्स प्रॉब्लम.
the scientists faced was getting the satellite into Mars orbit. अब अर्थ की ऑर्बिट से तो निकल जाएगा सैटेलाइट, देन हाउ विल इट गो इन मार्स ऑर्बिट? इफ द सैटेलाइट वाज टू स्लो इट वुड क्रैश इनटू मार्स। अगर ये स्लो होगा सैटेलाइट तो मार्स में क्रैश हो जाएगा पहले ही, एंड इफ इट वाज टू फास्ट इट वुड मिस द प्लैनेट ऑर्बिट एंड ड्रिफ्ट ऑफ इनटू स्पेस। और अगर इसकी स्पीड ज़्यादा तेज हुई तो ये मार्स को क्रॉस करके निकल जाएगा स्पेस में। इट वॉज एज इफ दे हैड टू हिट अ टारगेट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। तो उनको बहुत बड़ा टारगेट जो था थाउजेंड्स माइल्स का, उसको कंप्लीट करना था, हिट करना था उस टारगेट को। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड मी। सो learn it one time more. Okay. Thank you so much, students. Bye bye.